Do you know what is literary theory? Do you know from where the literary theory began? Do you know why Plato banished poets from his realm? All these questions are going to be answered in today's video. Hello there, I am Avik and with me you are watching Your Literary World. The first question here is that what is literary theory? If you are starting to read literary theory without knowing the definition of it, in the net examination you are going to face any kind of problem. And it is a very general and common question. So what is literary theory? It is nothing but a lens through which you are going to interpret a text in different ways. For example, that right now that I am reading a text known as Paradise Lost. In that Paradise Lost, if I am going to go for the materialistic point of view, it's going to be the Marxism. So the first lens here is Marxism. If I am going to go for the female's point of view, the condition of female, the condition of Eve in that particular poetry known as Paradise Lost, it is going to be feminism. If I am going to go for the ecological point of view, it is going to be the eco-criticism. And when it comes to literary theory, it is the same thing. Let me provide you an example. Suppose I am the author and I have been invited by you in a particular party, and in that particular party there are post-structuralists, there are deconstructionists, and there are psychoanalysts also. And in for the psychoanalysis we have Sigmund Freud as our guest and you have invited. So I went there in the party, and all of a sudden Sigmund Freud asked me that, may I ask you one simple question? I'm saying, okay, why not? And he says that, can you tell me what is the relation with your mother? That is a strange question. If you know psychoanalytical theory, you already know what I am talking about. So, when you have been interpreted by a person, possibly a psychoanalyst, in a different way, in the Oedipus complex way, then it is known as psychoanalysis. Now, there are people, those who are considered as deconstructionist and post-structuralists. They are asking me, sir, we have a question for you. I'm saying, okay, why not? They are saying that, no, not here. We have to come outside of the room. They are inside of the room. I am just in front of the door. They are saying that, do you consider yourself as the author? I'm saying, yes, why not? I am the author. And they're saying that is the death of the author. And they're simply shutting the door in front of my mouth. Can you believe these things? This is known as literary theory. It is, you can say in more simple way, it is a cloth. बाबू भैया को देखे हो कभी मूवी में, हेरा फेरी में? तो बाबू भैया को अगर तुम वहां पे देखोगे सेठ जी के पोशाक में, तुम वहां पे क्या वहां पे इंटरप्रेट करोगे? अरे इसके पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, है ना? अब अभी वहां पे बाबू भैया को अगर हम बोले कि चलो इनका पोशाक ही वहां पे बदल देते हैं, भिखारी का वहां पे पोशाक कर देते हैं, तो अगर बाबू भैया को तुम पहली बार वहां पे देखोगे तब तुम क्या उनको बोलोगे? अरे ये तो भिखारी है पूरी तरीके से। सॉरी बाबू भैया, बट दिस इज द ट्रूथ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ऐसे ही है लिटरेरी थियरी। वहां पे ये पोशाक है, जैसे तुम जिसको पहनाओगे वो ऐसे ही वहां पे रंग हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे पैराडाइज लॉस्ट में फेमिनिज्म है तो वो फेमिनिज्म है, अगर तुम बोलोगे सबाल्टर्निज्म है वहां पे मैकबेथ में, तो वहां पे मैकबेथ सबाल्टर्न स्टडी के अंदर वहां पे हो जाएगा। तो अगर सिंपल वे में मैं अगर इसको बोलूँ तो ये है एक पोशाक, जैसे उसको पहनाओगे वैसे वो हो जाएगा। एंड अगर इंग्लिश में बोलूँ, इट इज नथिंग बट अ लेंस, इट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। दिस इज नोन एज लिटरेरी थियरी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ट्रूथ। बाबू भैया हो सकते हैं सेठ जी हो सकता है भिखारी हो, वी डू नॉट नो द ट्रूथ। बट इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी थियरी देर आर different truths. It is not my word, it is known as Pythagoras. He says that truths are subjective, so there is no absolute truth at all. You know, when it comes to literary theory, when Socrates died, after that the theory rises in terms of Greek literature, and we can see the evolution of it. And in terms of the evolution, we have two different ideology. One is humanism, another is anti-humanism. So you can say that literary theory is divided in two parts. One is humanism, another is anti-humanism. What is humanism? Humanism means when something which is based on human centric. मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब I am the subject of every single thing. मैं क्या कर रहा हूँ, ये दुनिया घूम रहा है मेरे ही चार पास में, ठीक है, आस पास है ये दुनिया, पूरा मेरा ही है। आई एम द क्रिएटर, आई एम द ओरिजिनेटर, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑल्सो। दैट इज द सब्जेक्टिव थिंग। All right. So when something which is subjective, which is completely based on me, this is known as humanism. Now, what is anti-humanism? By the way, before going for the anti-humanism, Plato, Aristotle, Horace, Longinus, all these writers, they are belonging to the humanism. On the other hand, anti-humanisms are like Derrida, Michel Foucault,
Jacques Lacan. They did not like the classical ideology in the first place. They rejected that. They have a very kind of hatred towards the classical ideology. And this is known as anti-humanism, where the human-centric ideology is now decentered. Human वहाँ पे मूल स्रोत में है नहीं, वहाँ पे humans है ही नहीं. There is no humans at all. So when something which is human-centric, this is known as humanism. This is the first classification of literary theory. And something which is not part of humanism, where human is not centered. Everything can be centered, but not humans. This is known as anti-humanism. If you go for Derrida, if you go for Michel Foucault, they are all part of the anti-humanism, the development of the literary theory later. All right. Even Michel Foucault says that हम कैसे हैं जानते हो, मतलब इंसान जो है, it is the basic philosophy of anti-humanism that humans are going to be completely erased, completely eradicated in the face of the earth. And for that, in order of things, this is the name of the book, remember that, order of things, उन्होंने एक कोटेशन बोला कि ह्यूमंस ऐसे ही है कि रेत के ऊपर हमने अब कुछ लिख दिया है, एंड वो रेत जो है वो समुद्र के पूरे किनारे में है, पानी आएगा पूरी तरीके से मिटा करके चला जाएगा. दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस. दिस इज एंटी ह्यूमनिज्म, वेयर देयर इज नो ह्यूमन. कुछ हम वहां पे लिखने की कोशिश करेंगे, पानी आएगा पूरी तरीके से मिटा करके चला जाएगा. दिस इज द वर्ड ऑफ मिशेल फुको. सो ये वहां पे ध्यान से याद रखना. नाउ लेट्स मूव ऑन. देयर इज अ थियरी व्हिच इज नोन एज रिलेटिविज्म. फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो फॉर ह्यूमनिज्म, देन लेटर वी आर गोइंग टू गो फॉर एंटी ह्यूमनिज्म. सिंस मिशेल फुको, देरिडा, वी हैव टू रीड देम केयरफुली, है ना, when it comes to the net examination and CUET PG at the same time. So when it comes to the humanism, the first writer that we have is Pythagoras, not Pythagoras, all right, Pythagoras. He is a Greek philosopher. So he says that everything is truth. Whatever you are saying is true, whatever I am saying is true. If you are going for the net examination and you can say that paper 2 is very easy, it is also true. If you are saying that no, paper 2 was very tough, it is also truth. This is known as relativism, and this is the beginning of humanism per se. ऑलराइट. सो दिस इज द थिंग. देखे हो कि मम्मी को कभी नहीं, आई डोंट नॉट नो, जब उनको बोलोगे कि मम्मी क्या आप चाय ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब चाय लेकर के यहाँ पे आएंगी, तो वो देखना कि एक चाय का जो कटोरी है जो गर्म है पूरी तरीके से, वो वहाँ पे लेकर के तुम्हारे सामने आएंगे एंड वो बोलेंगे ये ले बेटा चाय पी ले. अब जब तुम देखोगे उनको कि वो जो चाय का कटोरी है, हाथ पे ऊपर वो चाय का कटोरी है पूरी तरीके से, वो जो गर्म है, मम्मी को तुम पूछोगी कि मम्मी क्या आपको ये चाय का जो कटोरी है वो गर्म नहीं लगता, वो क्या बोलेंगे, अरे नहीं ये चाय का कटोरी गर्म है नहीं. तब तुम वहाँ पे बोलना अरे मेरे को भी दे दीजिए ना. जब चाय का कटोरी हाथ में तुम वहाँ पे रखोगे, देखना आउच, अरे बाप रे हुआ क्या ये मतलब मैं कभी भी चाय में हाथ ही नहीं डालूंगा ऐसे. कैन यू सी नाउ? तो व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन इन दैट थिंग? यू आर गोइंग टू से द चाय, द कटोरी ऑफ दैट थिंग, द टी पॉट, इट इज वेरी हॉट. इट इज योर इंटरप्रिटेशन. बट मम्मी को वो वहाँ पे जाकर के पूछना, वो वहाँ पे उनका डेली काम है, वो बोलेंगे अरे ये सब कुछ भी है नहीं. देखना वहाँ पे वीडियोस है बहुत सारे यूट्यूब में, वो वहाँ पे कुछ पक रहा है वहाँ पे और हाथ ही डाल रहे हैं तेल के ऊपर, गर्म तेल के ऊपर. तुम डाल पाओगे? तुम बोलोगे अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है यहाँ पे, तो तुम हमारे लिए इट इज़ वेरी हॉट. बट द पर्सन हु इज गोइंग टू से नो, इट इज़ नॉट हॉट इन द फर्स्ट प्लेस. दिस इज नोन एज relativism or Pythagoras. This is the first theory that we finished. Now there are some problems with that. If you go for Marxism, the classical understanding, Marxists are going to say that okay, truth depends on the power. If I am, like we are going to discuss later these things, I'm just providing you a briefing. If I have the power, I'm going to tell you the truth. If you have the power, you are going to tell me the truth. If I am in the room, you can say, this is a kind of quotation, if we are in the room and I have the pistol in my hand, my truth is in my hand, your truth is also in my hand, so you cannot tell me the truth. I'm going to kill you. These kind of things happened. So this is known as the Marxist point of view. उन्होंने बोला कि relativism का कोई यहाँ पे जरूरत है नहीं. We cannot say that like you have your truth, we have our truth. But in terms of the understanding of the reality, it is not we have your truth, you have your truth, I have my truth. The truths are completely based on one person who is having the power, the superior in the power dynamic structure. Okay, the triangle in the classical understanding of Marxism. So this is the first thing. Now, when it comes to the concept of truth, it is the entrance of Plato. Plato completely disagrees with the concept of Protagoras. Protagoras was a relativist, and Plato says that no, I am a rationalist. So I am going to seek the answer through discussion, through arguments. If you go through the identification of Republic, the core philosophy of it is the argumentation. Asking, if I am saying truth, Plato is going to say, what is the truth? What is the definition of truth in the first place? All right, it is if you just go for the Republic, it's a very good book if you want to learn critical thinking. So Plato says that no, relativism is completely a bad thing. There is no such thing as your truth or my truth. There is only one truth, the universal truth. And he says that our world is divided in total two parts. In the first part, you are going to confront the physical world,
that physical world is the copy, it is not the actual world. हमारे जो senses हैं, our senses, this is the part of the physical world. Sometimes you can see that, oh, examination is near, you're going to say, oh, I'm not going to study, but at the same time when the examination is near, you are forcing yourself that I have to study. So who are you, the person who is having the feeling, or the person who is forcing oneself to go for the preparation? This is the question that Plato asked. So he says that we cannot say that physical world is the absolute truth. There is only one truth, and like physical world is the copy only, and there is only one truth, and that truth is the ideal world. So for Plato there are total two words. One is the ideal world, the absolute truth, and second is the mundane world, or you can say the physical world in the first place, or the materialistic world. And that materialistic world is the copy of the ideal world, and from that is coming the cave allegory. Net examination, CUET PG, or GATE examination, this idea is going to be very most important idea when it comes to reading of the Plato. So Plato says, so as you already know that there are two worlds, one is copy and another is real. So for Plato it is the seeking of the real. ठीक है, हमको ढूंढना होगा कि सच है कौन सा. So when it comes to the Plato, he says that there is a cave, and in that cave there are people, all right, and people, they are all chained, and in that chain they can see only one thing, their shadow. So what people are believing in that cave, shadow is the ultimate truth. But when it comes to Plato, he says that no, 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 no. Shadow is not the ultimate truth. You must ask yourself, what is the origin of the shadow? अगर वहां पे shadow है तो किसी ना किसी तरीके से तो वहां पे shadow create हो ही रहा है. तो उसका origin है क्या? Shadow तैयार कैसे हो रहा है वहां पे? ये हमको ढूंढना है. This is the, you can say, the experimentation, this is the innovation, this is the discovery, this is the adventure to seek the ideal world. Question karo, you have to ask repeated questions. Plato says that if you are not questioning, if you are not argumenting, you cannot find out the real truth in the first place. So he says that in the cave, people can only see the shadow. They are not questioning the origin of the shadow, from where the shadow is coming. Is there any question? Not at all. But if you are going to provide that kind of question, that no, the shadow that you are watching, it is not the real thing, that is the danger. You cannot create these kind of questions. People are going to kill you. अभी अगर मैं बोलता हूँ कि अरे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी बहुत बेकार है, राइट विंग आइडियोलॉजी बहुत बेकार है, जो लेफ्ट विंग राइट विंग आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से इंडोक्ट्रिनेट है वो पीछे पड़ जाएंगे मेरे. हाँ, व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स दे कैन नॉट टेल मी एनीथिंग. ठीक है, वो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग है, असर्टिवनेस है वहाँ पे. बट अगर तुम देखोगे हिस्ट्री को, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो है, राइट विंग आइडियोलॉजी जो है, बहुत ही वहाँ पे धमधार एंड घंघोर तरीके से उन्होंने वहाँ पे डिस्ट्रक्शन किया. कोई भी आइडियोलॉजी वहाँ पे जाकर के देखो, वेदर इज लेफ्ट विंग, राइट विंग, द रिलीजन और एनी सिंगल थिंग, तो जहाँ पे इंसान है वहाँ पे लफड़ा होगा ही. ये आइडियोलॉजी के ऊपर है नहीं. आइडियोलॉजी भी देखना, बहुत से प्रोफेसर हैं वो आइडियोलॉजी को यूज वहाँ पे कैसे करते हैं. अरे मैं तो उस आइडियोलॉजी में हूँ, अभी मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ एसी रूम में बैठ करके, तुम्हारे दुनिया में हो क्या रहा है. यहाँ पे मैं खा रहा हूँ पिज्जा, मैंने कभी दुनिया में भूख देखा नहीं है. अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भूख कैसा होता है, द एस्थेटिकनेस ऑफ हंगर, द इट इज एस्थेटिकनेस ऑफ स्ट्राइविंग हंगर, ये सब वहाँ पे लिख रहा है हम. अब ये जो है ये है झूठ, अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो. ही सेज दैट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग. सो वॉट यू कैन सी, इट इज नथिंग बट यू कैन से अ शैडो. जैसे सांप का वहाँ पे जो है ना वो निकल जाता है, द स्किन, दैट स्किन इज नॉट द रियल थिंग, अंडरनीथ द पर्सन इज द रियल थिंग. जस्ट लाइक यू कैन से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वैसा ही है वो. फर्स्ट इंप्रेशन जो है वहाँ पे वो है द काइंड ऑफ, यू कैन से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शैडो. All right, so when it comes to Plato, just remember that thing, that in the cave allegory there are people, those who can see only the shadow, and they are believing the shadow is the ultimate truth. There is nothing beyond that. But our inquiry, our adventure should be, what is the final thing from where the shadow is coming. So whatever we can see in front of us or outside the world or anything, everything is nothing but a copy of all. All right, so this is the copy. So we have to find the originality of it, and to find the originality we must know that we are in the copy. अगर तुम जानते ही नहीं हो कि तुम कॉपी के अंदर या ड्रीम के अंदर हो, तो अगर रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो तुम ड्रीम को ही बोलोगे ना रियलिटी है. जब रिकॉग्नाइज करोगे ये ड्रीम है, तभी वहाँ पे ढूंढने के लिए जाओगे, अरे चलो इससे बेहतर भी कुछ है क्या, truth. So this is the thing when it comes to Plato's cave allegory. In the cave allegory, all the people, those who are in the cave, they are all naive. They are believing that there is no existence of the reality or the ultimate truth at all. They believe that what they can see through their senses, through their eyes, this is the ultimate truth. But this is completely wrong. And for that, Plato created a pyramid, triangular pyramid. In the bottom, we have the
absolute copy. In the like there are three stages. In the bottom we have the absolute copy. In the second stage we have another copy, and in the top we have the ideal thing. So go for from top to bottom. The ideal thing, the copy of the ideal thing, the copy of the copy. मतलब यही है कि you are going for the net examination. I am saying, since you are my student and you are part of the course, I am saying that for the net examination you have to read Plato, Aristotle, Longinus, and Horace. When you are creating the note, you are just writing Plato and Aristotle. When you are providing that note to your friend and he is copying from your note, he is writing only Plato. तो तुमने क्या किया? मैंने बोला था 4 राइटर, आई सेड ओनली 4 राइटर्स, यू एलिमिनेटेड 2. अब तुम्हारा जो दोस्त है वो वहां पे और भी एक एलिमिनेट कर रहा है. तो मेरे पास था 4 जो था आइडियल, तुम्हारे पास वो घूम करके कॉपी करके आया 2, एंड तुम्हारे जो 2 है उसने उससे कॉपी किया, मेरे से नहीं तुमसे कॉपी किया, वो हो गया 1. ये जो 1 है ना, जो 3 नंबर में कॉपी कर रहा है, ये प्लेटो ने बोला ये है पोएट. अगर पोएट जाकर के जो आइडियल है उससे कॉपी करता था तो हो ही जाता. पोएट्स आर नॉट कॉपिंग फ्रॉम द आइडियल, पोएट्स आर कॉपिंग फ्रॉम द कॉपी. एग्जामिनेशन में कोई लिख रहा है, उसके पीछे तुम हो, तुम उससे कॉपी कर रहे हो, तो तुम हो यहाँ पे पोएट. अब पोएट्री को उन्होंने बोला है पोएसिस. एग्जामिनेशन में एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा है लॉन्जाइनस के ऊपर, अगर पोएट्री इक्वल्स टू पोएसिस अगर तुम जानते हो तो वहां पे एग्जामिनेशन में आंसर हो तुम कर पाओगे. बट इन जनरल पोएसिस इज नॉट ओनली पोएट्री, इट इज एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म. All right, so just remember that thing. So when it comes to Plato's cave allegory, there are 3 stages in the pyramid. In the top we have the absolute knowledge, in the middle we have the copy of the absolute knowledge, and in the very bottom we have the copy of the copy. 3 stages. All right, that's the reason for some scholar, the scholar is going to say it is 3 times removed. So reality is 3 times removed, बट फॉर मी इट इज 2 टाइम्स रिमूव. क्योंकि अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ एक कॉपी से तो वो 2 हुआ ना, कैसे 3 होगा? हाँ, अगर मैं स्टेज देखूँ, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, देन आई कैन से दैट रियलिटी इज 3 टाइम्स रिमूव्ड. And these 3 times removal of the reality is the presentation of the poet. Poets creating copy from the copy. If there is a sun, I cannot see the sun, I am seeing my shadow. And poets or painters, what they are doing, they are creating the painting, they are creating the poetry by watching my shadow. So they are not seeing the reality in the first place, the absoluteness in the first place. समझ गए हो या नहीं? मतलब मैं यहाँ पे तुमको कुछ बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट है वहाँ पे, वो स्टूडेंट मैं जो बोल रहा हूँ उसका कॉपी कर रहा है, वो भी हाफ, एंड तुम कॉपी कर रहे हो उसका हाफ जो स्टूडेंट ने वहाँ पे लिख रहा है उसके ऊपर. तो एग्जामिनेशन में जब तुम वहाँ पे जाओगे तो मैंने बोला कि वहाँ पे 4 राइटर्स पढ़ लो, 4 राइटर्स मतलब 8 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, तुमने वहाँ पे पढ़ के गए हैं 2 राइटर्स, 2 राइटर तुमने छोड़ दिया. अब 2 राइटर से जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा 4 क्वेश्चन टोटल, तब तुम वहाँ पे देखोगे वो 2 क्वेश्चन के कारण वहाँ पे जेआरएफ छूट गया. अब जो तुमसे कॉपी किया है वो उसने लिखा सिर्फ 1, उन्होंने 3 क्वेश्चन, वो जो 3 राइटर्स है उन्होंने लिखा ही नहीं, तो वो 3 के कारण उसका नेट छूट जाएगा. तुम्हारा गया जेआरएफ, उसका गया नेट. अब उससे अगर कोई पढ़ेगा तो उसका तो पीएचडी भी नहीं होगा. ऐसे हो गया हो, क्योंकि वो उसका भी कॉपी तैयार करेगा, वो भी हाफ होगा. Can you see? So we have to find out the absolute thing first, the absolute truth. And we have, if I am going to create, if I am going to copy the absolute truth, the copies are going to be useful. But हम कॉपी वो absolute truth का कर नहीं रहे. वो जो absolute truth है उससे कुछ आ रहा है, उसका हम कॉपी कर रहे हैं. It's like मैं मान के चलो कि रिलेशनशिप में जो होता है, मान के चलो कि वहाँ पे एक 3 नंबर वहाँ पे लोग है, इंसान है, ठीक है, तुम्हारे दोनों में झगड़ा हो गया, तुम उसको बोल रहे हो अरे भाई उसको जाकर के बोल ये होगा. अब वो कैसे प्रेजेंट करेगा तुम तो नहीं जानते हो, तुम वहाँ पे बोलते हो का, वो वहाँ पे जाकर बोलेगा गा. राइट, सो दिस इज द पोएट्री, दिस इज द पोएट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोएट. इसीलिए पोएट्स को रहना ही नहीं देना चाहिए. कैलियोपोलिस उसका आइडियल शहर है प्लेटो का. ही सेज दैट गो टू हेल विद पोएट्री, गो टू हेल विद पोएट्स, वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ पोएट्स इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज दे आर प्रीचिंग द फॉल्सहुड, दे आर मेकिंग द पर्सन स्पेसिफिकली वीक. And इसीलिए that's the reason Plato hated tragedy. He says that tragedy is for weak. You are not going to say, oh, I'm emotional. You cannot say these things. You must say, I am brave, I am the man. मर्द को कभी दर्द नहीं होता, चाहे मर्द वहाँ पे टूट जाए, दर्द होता है, दर्द होने दो, प्यास लगी है मुझको पीने दो. अब उसको बाद वो होगा वो देखा जाएगा, प्लेटो तब वहाँ पे आएगा नहीं. So Plato says that tragedy is not important, tragedy is the worst case scenario, tragedy is very bad. At the same time, Plato says that poetries and poets are very bad, they should not be here. Now let's go for Aristotle. What Aristotle says, Aristotle defended tragedy. Aristotle says that there is a concept known as catharsis. Catharsis means purification. ठीक है, मतलब you are in the dart and the water that you are going to take, it is known as catharsis.
So he says, according to Aristotle, he completely disagrees with Plato. Oh, by the way, I forgot one thing. The copy of the copy is known as mimesis or mimesis. Imitation. मैं भूल गया था वो पूरी तरीके से. I'm extremely sorry. ठीक है. It is not the copy which is known as mimesis. Poets are not copying. Poets are copying from the copy. So this is known as mimesis. So copy of the copy known as mimesis, mimesis और mimesis भी तुम बोल सकते हो. मैं mimesis और mimesis दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज करता हूँ. ठीक है. तो ये हो गया प्लेटो का वहाँ पे पार्ट. एग्जामिनेशन में आएगा, अच्छी तरीके से याद रखना ताकि एग्जामिनेशन में गलत ना हो, ताकि मेरे को सुनने को ना मिले सर भैया मैं तो गलत करके चली आई हूँ, ये ना हो वहाँ पे. ठीक. चलो अब आते हैं एरिस्टोटल के ऊपर. व्हेन इट कम्स टू एरिस्टोटल, ही सेज दैट गो टू हेल विद प्लेटो, आई एम गोइंग टू थिंक कि ट्रेजेडी इज द ग्रेट थिंग, ट्रेजेडी इज द बेस्ट. So he says that with tragedy you are going to go for a purification. So you can say Aristotle was the first psychologist. वो बोल रहे थे कि अगर तुम नहीं रोते हो तब तो फंस जाओगे ना तुम बाद में जाकर के. तब वहाँ पे तुम क्या करोगे जब तुम फंस जाओगे. साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे आएंगे, प्लेटो वहाँ पे आएंगे, मूवी देख रहे हो वहाँ पे, मान के चलो कोई भी मूवी वहाँ पे, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी मूवी जो तुम वहाँ पे पसंद करते हो, एंड यू आर क्राइंग. इफ इट्स एरिस्टोटल, ही इज गोइंग टू से oh it is a tragedy and it is good that your thoughts are cleansing, your thoughts are becoming pure. But what if it is Plato? Plato is going to tell you that no, do not go for crying. Suppress it, condense your emotions and make it in small pot, make it small number. Do not cry. इंसान हो तुम, मर्द हो तो मर्द को दर्द नहीं होता, चाहे कितना भी वहाँ पे कुछ भी हो जाए. But Aristotle is going to say, no, that approach is wrong. You're going to face huge amount of problem in your life, emotional problem specifically. So we need the catharsis, we need the emotion, and it is the tragedy which is the best form through which you can cleansing your thoughts. You can cry. जब वहाँ पे रोते हो तब वहाँ पे हल्का हो जाते हो. ठीक है. जिन्होंने रो है वो वहाँ पे जानते हैं. Never mind. And after that, in the NET examination, you're going to face this kind of problem. And after that, Aristotle says that if we go for the division, there are total 6 characteristics that we have to remember. And for that, I'm going to provide you the slide. So there is also, you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are total 6 pointers. So in the first point, we have the plot according to Aristotle. So he says that plot is the most important thing. Do not forget about plots. नहीं तो तुम ही वहाँ पे प्लॉटलेस हो जाओगे. Plot can be simple, plot can be complex. When we're going to deal with literary criticism, we are going to tell about these things, but these are also part of literary theory in the first place. These are all classical literary theory, you can say. So Aristotle is saying that plot is the best thing. Without plot, we are going nowhere. Plot must be sequential. ये है like research steps. तुम पहले ही वहाँ पे बोलोगे नहीं कि अरे this is my research, this is the conclusion. You are going to tell you this is the beginning of my research. There is a question. All right, literature review all the things. And Aristotle says the same thing. When it comes to the plot, it must be sequential. It must have a sequence. At the same time, it must be very great. So plot is going to be first, rank 1. After that, characters. And when it comes to specific characters, it is not the character which is important, but actions are important. It is not Achilles who is important. It is not Hector who is important. But Achilles is just holding Hector and dragging him with his chariot. जो रथ है उसको खींच के वहाँ पे ले जा रहा है मारने के बाद. This action is important, not the character. Getting my point? Then what is said by these characters? This is important. Then the language is going to be important. Then the song is going to be important. And then the spectacle. ये है मंच. This is the stage. That is going to be important. So stage एकदम आखिरी में आएगा वहाँ पे. प्लॉट आएगा पहले में. दूसरे में वहाँ पे आएगा एक्शन ऑफ द कैरेक्टर और कैरेक्टर स्पेसिफिकली. तीसरे में आएगा द थॉट्स. What you are preaching, what is the motive, then the language, the diction of the characters, then the song, then the spectacle. That is the chronology. रट्टा मार लो पूरी तरीके से, ठीक है, याद आ जाएगा. वो 3 और 4 में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है. कैरेक्टर्स का जो वहाँ पे एक्शन होगा उसके ऊपर, ठीक है, मतलब वहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, एंड वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो. सो डिक्शन पूरी तरीके से. But if you go for the British writers, specifically Inigo Jones and specifically Ben Jonson, mask and anti-mask concept, you are going to find out that in terms of Ben Jonson, he is following the classical idea that yes, there must be poetry which is important. Obviously, in terms of not Plato. So poetry must be important. But when it comes to Inigo Jones, he says that no, spectacle is important. So spectacle Ben Jonson के लिए आखिरी में आता है, Inigo Jones के लिए पहले आता है. उसके बाद तो Ben Jonson constituted and invented the idea of the anti-mask, जो वहाँ पे देखने को मिलेगा टेम्पेस्ट में. So I believe you got the idea of literary theory,
the beginning, the ending, and every single thing. I believe we are done. Yes, we are done. You're going to get the slide. Need not to worry. Tragedy, mimesis 3 times removed or 2 times removed, all सब वहाँ पे कर दिया है. Allegory of the cave, beginning ending सब कुछ वहाँ पे खत्म. तुम जानते ही हो theory of क्या है, वो पोशाक जैसा है, जैसे पहनाओगे वो हो जाएगा तुम्हारा. So this is the ending of literary theory. I believe that you got the idea what is literary theory and how it works. So next time we're going to go for the video of hermeneutics and Heidegger. You have to read. This is very important for NET examination, specifically the way that they are asking questions. So that's that. And if you want to join the Telegram channel known as Your Literary World, you're going to get the link in the description box. Or if you want to join the WhatsApp channel, you're going to get the link in the description box. At the same time, I'm going to just pin these links in the comment section. So हैव अ ग्रेट डे. पढ़ना बढ़िया तरीके से. कल से विक्टोरियन लिटरेचर शुरू होने वाला है वहाँ पे मॉक टेस्ट में. सो पढ़ के आना, ठीक. सो हैव अ ग्रेट डे हेड. आई बिलीव दैट यू गॉट द आइडिया एंड द एंटरटेनमेंट एट द सेम टाइम. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय.